like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away a month or more, every show. Hey everyone, it's your girl Shalini. Welcome back to my channel. I really hope you all are doing well. So in today's video, I'm going to show you my weekly pamper routine, things that I like to do on a weekly basis to maintain the overall health of my skin, body and hair. So आप लोग कह सकते हो this is a maintenance routine of mine. And जब से मैं जबलपुर से वापस आई हूँ, I was in जबलपुर for 3 days. उसमें से 2 दिन I attended one of my friend's wedding और एक दिन में 2 सेरेमनी होती थी और मैं मेकअप को 4 से 5 घंटे तक लगा के रखती थी. I was using a lot of hairspray on my hair. My skin, body and my hair suffered through a lot because of that, and I was in need of this pamper routine. So anyway, I was gonna do it, so I thought let's just film it and show you what all the things that I like to do. So without further ado, let's begin. So उठने के तुरंत बाद I decided to like film myself to show you the real me. I have extremely oily scalp currently and there is lot of build up on my scalp. अगर आप मेरी nails देखोगे कितनी ख़राब हालत में है. And this is the condition of my skin. I won't say कि मेरी skin एकदम ही ख़राब हो गई है या ख़राब दिख रही है. But अगर आप पास आके देखोगे there are some things that I need to take care of. Like there is black hairs, white hairs, facial hair has grown back. There is some dead skin cells on my face, dry patches on my face. So यही सारी चीज़ें आज हम लोग target करेंगे. And this is gonna be a very relaxing pamper routine. We are starting off with nails. I need to remove this nail paint. It looks so ugly on my nails. So I'm using Calabar Acetone Free Nail Paint Remover. This one has protein and vitamin B5 in it. ये nails को बिल्कुल भी dry नहीं करता है और मैंने use किया है charcoal cotton pad. Nail paint remove करने के बाद this is how my nails are looking better, but we need to make them much better. So I started off by cutting the shape of my nails. So काफ़ी uneven से nail हो रहे थे मेरे. मैं एकदम ही length ख़त्म नहीं कर रही हूँ अपने nails के, हल्का सा length रख रही हूँ ताकि थोड़ा room मिले उसे ग्रो होने में. और मैं एकदम ही छोटे छोटे नेल्स बिल्कुल पसंद नहीं करती. आई फील लाइक दे मेक माई नेल्स मोर सेंसिटिव. देन आई एम यूजिंग द टूल दैट केम विद द कटर इटसेल्फ एंड आई एम क्लीनिंग द नेल्स इनसाइड ऑफ द नेल्स. बेसिकली जो भी गंदगी होगी उसे मैं निकाल दूंगी. एंड देन आई विल यूज माई नेल फाइलर. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट नेल फाइलर्स ऑफ ऑल द टाइम. अगर इसका लिंक मुझे मिले तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आई विल स्टार्ट फाइलिंग द शेप ऑफ माई नेल्स दैट आई हैव गिवन करेंटली एंड ऑल्सो द टॉप पार्ट ऑफ माई नेल्स, ताकि कोई भी येलोनेस मेरे नेल्स पे रहा होगा वो रिमूव हो जाएगा. अगर मेरे क्यूटिकल्स कहीं से निकल के आ रहे होंगे उसे भी मैं फाइल कर दूंगी ताकि अच्छे से स्मूथ हो जाए द सरफेस ऑफ माई नेल्स. And then I will start pushing my cuticles backwards. Cuticle pusher भी आता है but I'm using my nails, thumb का nail to do that. If you're not comfortable pushing your cuticles backwards, don't do it, okay? But I like to do it. So अच्छे से cuticles को push करने के बाद I will use my nail cutter to cut my cuticles. Okay, again, if you're not comfortable doing it, do not do it. Lastly, I'm going to use some Boroline. This is antiseptic and also this is going to be very hydrating on the nails. So मैं इसे cuticles पे apply करके अच्छे से मैं massage कर रही हूँ अपने cuticles को. And we have taken care of our nails, but we need to apply the nail paint, which we will do in the next day. It's time to take care of my hair. For that I'll be using DIY hair scrub. ये hair scrub help करेगा जो भी build-up है ना मेरे बालों में, जो कि काफ़ी ज़्यादा build-up है, उसे remove करने में. And it is also gonna help with the blood circulation on my scalp, which in turn is gonna promote hair growth. So you need kitchen ingredients to make this mask except the oil. मैं use कर रही हूँ a mix of different oil. You can also use coconut oil, but coconut oil मुझे suit नहीं करता है. And you need only 4 ingredients. So ये है half a cup of Himalayan salt. You can use regular salt. Okay, then I will add 1 tablespoon of honey, 1 tablespoon of apple cider vinegar, and 1 tablespoon of oil. This is 1 tablespoon of apple cider vinegar and now we mix this together. So मैंने इसमें थोड़ा सा और honey add किया है to make a consistency like this. Okay, now it's ready to use. Let's go to the washroom and use this. So welcome to my washroom. The first thing that I'm doing is detangling my hair. This is a very important step. Do not skip on this step. And then I started applying the salt scrub section by section on my scalp. Now one mistake that I did here is that I applied the salt scrub on my dry hair. I was supposed to damp my hair, which I later realized. आप लोग देख सकते हो यहाँ पे I realized, oh, I need to damp my hair. So I started applying some पानी का छींटा all over my hair. और आपको आपके बालों को damp रखना है, wet नहीं रखना है. Otherwise wet में क्या
होगा, पूरा का पूरा सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा आपके बालों में एंड यू डोंट वांट दैट, यू नो, यू वांट टू स्क्रब योर स्कैल्प, राइट? सो यू नीड salt particles on your hair. Now the salt in our scalp scrub is going to remove and loosen up any flakiness on our scalp. This is going to also help with the dandruff problem. थोड़ा बहुत जो भी dandruff problem रहा होगा मेरे बालों में और कोई भी build up होगा उसे remove करने में help करेगा और blood circulation level को भी increase करेगा. And also AC with the salt scrub has is going to help in balancing the pH of our scalp. और जो हमने oil add किया वो nourishment provide करेगा. And honey is antibacterial. So we are getting all the benefit out of this salt scrub on our hair. लोग देख सकते हो कि मैंने एक ऐसा टी-शर्ट पहना है that I care about. So wear a t-shirt you do not care about, okay? And use your fingers to scrub your scalp. Do not use your nails, you can damage your scalp. And if you have extremely sensitive and dry scalp, do not use this salt scrub. It can cause irritation on your scalp. So after massaging the scalp for about 5 to 10 minutes, I'm going to keep it on for about 1 to 2 minutes. उसके बाद I'm going to rinse this off using my regular shampoo. उसके बाद मैं conditioner भी apply करूँगी for the length of my hair. आप लोग के साथ मैंने अपना shower routine already share कर लिया है. If you want to watch the detailed version of my shower routine, click the I button and go watch it. I've also decided to use some coffee body scrub all over my body just to remove the dead skin cells from my entire body. This is also going to help with the ingrowth problem that I suffer क्योंकि wedding में जाने से पहले I went for waxing treatment, so ingrowth hair हो जाती है if I won't scrub my body properly. So I applied the body scrub all over my hands, my legs, my elbows and also my knees, and मैंने अपने पैरों में भी apply किया. And I also applied shower gel to remove the residue of the body scrub. Okay, I'm back from the shower. I'm quickly gonna apply body lotion all over my body and then we will take care of my face, like I need to shave my facial hair. So before I remove my facial hair, I'll be applying DIY lip scrub. This is gonna help in melting away the dead skin cells from my lips and chapped lips की जो problem है ना उसे solve करने में help करेगा. So this lip scrub has white sugar granules in it, cinnamon plus honey in it. So cinnamon और sugar help करेगा lip को scrub करने में and honey is gonna be very nourishing on the lips. So मैं इसे lip पे apply करके रख दूंगी तब तक जब तक मैं अपने facial hair को remove करूंगी. मैं चाहती तो ये facial hair removal routine skip कर सकती थी क्योंकि कितनी बार मैं अपने channel पे दिखा चुकी हूँ, but the reality is that this is a huge part of my pamper routine. I like to shave my face every third day because I do get a lot of facial hair, so that is what I'm doing. So आप लोग ने देखा सबसे पहले applied some aloe vera gel and then I used my razor in an angle and I started shaving in the direction of the hair growth. And I'm planning to get laser treatment done for my facial hair. Obviously जब भी वो होगा मैं उसके बारे में और डिटेल में बात करूंगी अपने चैनल पे. So lips के आसपास facial hair remove करने से पहले I removed that lip scrub using this cotton pad. This is a charcoal cotton pad by Miniso. उसके बाद I applied aloe vera gel around my lips and I used my razor to remove my facial hair around my lips, and that's how I like to remove my facial hair for like 10th time on this channel. And lastly I rinsed my face off using some normal water. I also applied some niacinamide serum all over my face. This is anti-inflammatory, so that's why I like to use this whenever I shave my face. This is very gentle on the skin. And I also hydrated my lips using this lip balm by Sugar, and once my entire hair was air dried, this is what my hair is looking like. You all can see that there's some shine on my hair, no residue of any buildup on my scalp, so I'm really thankful to that scalp scrub that I applied on my scalp. You can use that once a week only, okay? You don't want to overdo with scalp scrub also. Today is day 3 of the pamper routine और आज हम लोग pamper routine को complete करेंगे. ये है शाम का समय and this is what my skin is looking like. It is already looking much better. Now one thing that I love to include in my pamper routines is using actives to target blackheads, whiteheads, uneven skin tone, acne marks, acne scars and uneven tanning that is going on my forehead, which I got when I went to Jabalpur. I was there for 4 days as I said. So I'll be using this combination of AHA BHA peeling solution. This is 15% AHA plus 1% BHA beginner face peeling solution by the brand The Derma Co. This one has 5% glycolic acid, mandelic acid and lactic acid in it and 1% salicylic acid. And you guys know my love for salicylic acid. I love to use that to target whiteheads and blackheads. Okay, so before using this peeling solution, I'll be washing my face using a gentle cleanser and then I will pat dry my skin. Uske baad I will use this peeling solution on my face and then with the help of a Q-tip, I will start spreading this solution evenly all over my face except the under eye area and around my lips. You all know that how much I love to use actives on my skincare regime. There are some actives that I like to use on a daily basis and some on the weekly basis, and this peeling solution is gonna exfoliate my skin surface and gonna exfoliate the deep layer of my skin. Now this one has 1% salicylic acid in it, which is a BHA, beta hydroxy acid, and this is oil soluble. They work on the deep layer of your skin, removes the dead skin cells from the skin, also target acne, acne marks, and also they reduce sebum production on your skin, and that's how they work on the blackheads and whiteheads. This one also has glycolic acid and lactic acid in it, which are AHAs, alpha hydroxy acid, and they are
water soluble. They work on the surface of the skin, removes the dead skin cells and reveal a very young and youthful looking skin. So मैंने एक दिन का गैप इसलिए रखा था क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही यूज किया था फेस रेजर एंड दैट ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सफोलिएट्स द स्किन, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं ये केमिकल एक्सफोलिएटर 1 से 2 दिन बाद यूज करूँ ताकि आई वोंट ओवर एक्सफोलिएट माई फेस. एंड माई फेस वॉज इन नीड ऑफ अ डीप क्लिनजिंग रूटीन, सो आई विल बी कीपिंग दिस ऑन फॉर एटलीस्ट 10 minutes only and then I will rinse this off using normal water. And this is what my face is looking like. I wish you could just feel my skin. It was feeling so soft to touch. My skin was feeling deeply cleansed. Yes, I need to apply some moisturizer and sunscreen abhi. Can I just appreciate my own skin यहाँ पे? So once a week only मैं ऐसे peeling solution use करना पसंद करती हूँ अपने face पे. I don't like to overdo with skincare products and skincare regime. So once a week only. So now I'm using my moisturizer. इस peel को apply करने के बाद skin हल्की सी dry लग सकती है. एक और फायदा ये होता है केमिकल पील यूज करने का कि इसके बाद आप जो भी प्रोडक्ट्स अपने फेस पे अप्लाई करते हो ना वो अच्छे से आपकी स्किन की डीप लेयर पे जाता है एंड इट वर्क्स ब्यूटिफुली ऑन योर स्किन. एंड देन आई ऑल्सो यूज्ड माई सनस्क्रीन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज सनस्क्रीन आफ्टर यू यूज एनी एक्टिव ऑन योर फेस बिकॉज एक्टिव्स आर लाइक फोटोसेंसिटिव एंड ये सनस्क्रीन हल्का सा व्हाइट कास्ट पहले छोड़ता है और फिर जब स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है तो इट वोंट लीव अ व्हाइट कास्ट. एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ माई स्किन. एंड नाउ माई स्किन फील्स डीपली क्लिन्स्ड और अच्छे से नरिशमेंट भी दे दिया है मैंने. माई स्किन फील सो सॉफ्ट टू टच. इंस्टेंटली रिजल्ट मुझे मिला. आई एम सो हैप्पी विद इट एंड आई एब्सोल्युटली लव टू वर्क विद द डर्माको. दिस इज अ ब्रांड विच इज डिजाइन्ड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ऑल ऑफ देयर स्किन केयर प्रोडक्ट्स आर इफेक्टिव एंड सेफ टू यूज ऑन योर स्किन. एब्सोल्युटली मस्ट हैव इन स्किन केयर किट आई फील. एंड इफ यू आर अ टीनेजर ऑल्सो यू कैन ऑल्सो यूज दिस. यू कैन यूज दिस वंस अ वीक एज आई सेड एंड डू अ पैच टेस्ट बिफोर यूजिंग दिस दैट यू विल नो कि ये आपकी स्किन पे कैसा रिएक्ट कर रहा है. आई डू हैव अ कूपन कोड फॉर द डर्माको दैट इज Shalini20. अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे you will get 20% off on all of your purchases. So check out the links in the description box below. My pamper routine is obviously applying a nail paint that will last throughout the week. So this is 3-step nail care routine that I like to do. The first thing I did, I applied a base coat. This is by Innisfree. Base coat से क्या होता है आपकी स्किन की नेल स्मूथ हो जाती है, उसके ऊपर आप जब नेल पेंट अप्लाई करते हो ना काफी अच्छे से बैठता भी है वो. इसके बाद I applied Sally Hansen's Extreme Wear nail paint in the shade Mauve Over. काफी अच्छा नेल पेंट फॉर्मूला है ये, लॉन्ग लास्टिंग भी है और एक ही कोट लगता है to get that opaque color. So इसको अप्लाई करने के बाद I waited for like 10 minutes. Then I applied my top coat. This is a gel top coat by the brand Sally Hansen again. And मैंने इसे काफी अफोर्डेबल प्राइस में I bought this like 60% off from Nykaa when they were having their season sale. Okay, and the quality is just top notch. So ये बहुत अच्छे से स्मूथ कर देता है आपके नेल पेंट को अगर कहीं पे weirdly अप्लाई हुआ होगा वो. And also this makes your nail paint last longer और चिप होने से भी बचाता है, एक्स्ट्रा शाइन भी प्रोवाइड करता है. So I applied this all over my nails. मुझे मेरे पैरों का नेल पेंट भी चेंज करना था, so I followed the exact routine like filing, cutting my nails, and I applied this nail paint only. And this nail paint is gonna last for up to a week. Comment down below and let me know how many t-shirts I've changed in today's video. So काफ़ी लोग को ये लगता है कि I have so much volume on my hair, but ऐसा कुछ नहीं है. They look voluminized because my ends are very frizzy in nature and I have split ends, जिसकी वजह से volume दिखता है मेरे बालों में. Otherwise I have very thin hair. Now the next thing in my pamper routine is actually trimming away the split ends. Okay, जिसकी वजह से बहुत roughness आ जाती है मेरे बालों में और styling करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए. The first thing that you need to do is obviously make sure your hair is completely dry. So my hair is completely dry and now I'm going to be creating 2 sections of my hair. The lighting in today's video is going to change a lot because I'm filming this in natural lighting and I cannot control natural lighting. Okay, and the next thing that you're going to do is take 1 inch section of your hair and start rotating it like that. उसके बाद take your scissors. अगर आपके पास cutting scissors हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास crafting scissors है. और जस्ट चेक करते रहो कि कहाँ कहाँ पे आपको ऐसे स्प्लिट एंड्स दिख रहे हैं, ठीक है, और इसे बस काटते जाओ. नीचे ज़्यादा दिखेंगे तो नीचे थोड़ा ध्यान से इसे काटते जाओ. एंड आई नो दिस प्रोसेस इज़ वेरी लेंदी बट इट इज़ सो सेटिस्फाइंग. एंड इसके बाद बाल थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, इसे रफ नहीं लगते. One section is done. So instead of doing this weekly, मैं once a month इसे करना पसंद करती हूँ. मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेथड एकदम 100% काम करता है और आपके सारे split ends चले जाते हैं, but it does work, you know. जो भी आपको split ends आपके naked eyes से दिख रहा है वो तो आप आराम से इसे काट सकते हो. Okay, this side is done. I can definitely feel less roughness. Okay, let me finish the entire hair. I'll be right back.
So this is the final result. My hair definitely feels more softer now. ज़्यादा स्प्लिट एंड्स थे नहीं मेरे पास क्योंकि मंथली बेसिस में वैसे भी स्प्लिट एंड्स निकालती रहती हूँ, बट अगर आपने कभी भी अपने स्प्लिट एंड्स ऐसे काटे नहीं है आपको काफी ज्यादा स्प्लिट एंड्स दिखेंगे, देख लेना। So this was my weekly pamper routine. 3 दिन लग गया मुझे ये फिल्म करने में, बट मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। I'll be also providing you a very affordable option of the nail paint that I showed in today's video, क्योंकि Sally Hansen के nail paints थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। So मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अफोर्डेबल ऑप्शन दे दूंगी। और जैसे कि मैंने इस वीडियो में केमिकल पील यूज किया ना, अपार्ट फ्रॉम केमिकल पील I also like to use like face mask on my face on weekly basis, and particularly face mask which has like actives in it, just a 2% salicylic acid face mask by this particular brand Dermaco is another one of my favorite to use on a weekly basis. So yes, I like to switch my products. So yeah, this is the video for today you all. I really hope you enjoyed watching today's video, found today's video helpful, informative or relaxing. If you truly did, then please make sure you subscribe to my channel if you haven't already. Like this video, share this video with your friends and family. Do not forget to comment. I love to read your comment, you guys know that. And I'll see you next time with brand new content for this channel. Bye bye you all. टेक केयर। कभी कभी मैं ऐसे एकदम शताब्दी की स्पीड में बोलने लगती हूँ ना, बाय।